Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you'll be fine. I'm here with a new video that is related to sour grapes of textbook New Oxford Modern English Book 5. Today we are going to read it and along with the reading part, we are going to discuss word meanings and explanation. So let's start with the words to know box. Here we have been provided with few words and their meanings, so let's discuss them first. But before starting the video, please like it, share it, and subscribe to the channel if you are new. Mean means miserable and poor. Mean is a word that is also used as someone who is selfish. ठीक है, बहुत खुदगर्ज इंसान के लिए भी मीन का वर्ड यूज़ किया जाता है. और यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है मीन, इट मीन्स मिजरेबल एंड पुअर, यानी कि बेचारा और गरीब. पावर यहाँ पे आपको अपोस्ट्रोफी के साथ लिखा हुआ है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस हैं और ये बेसिकली पावर है यानी कि ताकत वगैरह. Reynard is the name of a fox in French fables. That is, in French tales, you'll find the name for fox as Reynard. And throw is the short form of through. Tis means it is, and wine is a grape plant. What is a grape plant, students? It's basically a sort of a plant. As you can see on your screens, that we have been provided with this one. You can see that these plants are basically having a growth not at the bottom, right? They do not have their growth at the bottom and on the ground, but they have a tendency of growing habit of trailings or climbing stems, right? They try to get up as they grow. So let's begin the reading of this chapter, and I'll share with you more word meanings that will come across. So let's start with the poem. A fox was trotting on one day, and just above his head he saw a vine with lovely grapes, rich, ripe, and purple red. Right, students? So here we have rhyming words head and red. A fox was trotting on one day. That is, he was jogging, roaming around in the garden, and just above his head, that on his way, he found on his head a vine with lovely grapes. As you can see over here, he was walking, he was jogging, and just above his head, he saw a vine tree, and over that vine tree, there were rich, ripe, and purple red grapes. Right? Vine is a grape tree where there are sometimes the lovely grapes. So here you can see these are purple red grapes. Rich means full of and loaded with. Similarly, ripe means something that is ready to eat, full grown, and these were juicy and very delicious sort of grapes. Eager, he tried to snatch the fruit. Eager means impatient, keen, बेताब हो जाना, बेचैन हो जाना. He tried to snatch the fruit. He tried to get the fruit, but it was too high because it was trailing upside and it was beyond the reach of this fox. So he said, it was too high. Poor Reynard had to give it up. He had to surrender. He had to leave them because he was not able to get those ripened grapes. And heaving a deep sigh. So sigh is basically breathing out, exhaling, and making a sound of like So when we are in grief or when we are having some sorrow, we used to breathe like this. So he was with his heavy heart said, "Oh, I cannot get these grapes." So what next? Let's see. He curled his nose and said, "Dear me, I would not waste an hour upon such mean and common fruit. I'm sure those grapes are sour." तो उसने क्या कहा? उसने
he curled his nose, उसने अपनी नाक से कोड़ी, and curled his nose means to refuse for something, ठीक है, किसी चीज़ को मना कर देना, and said to himself, dear me, I would not waste an hour, मैं अपना वक्त यहाँ पे ज़ाया नहीं करूँगा upon such mean and common fruit, इस बेकार और इतने आम से फ्रूट के लिए, इस आम से जो है वो फल के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. आई एम श्योर दोज ग्रेप्स आर सावर, और खुद ही क्या सोच लिया, मुझे यकीन है कि ये अंगूर खट्टे होंगे, मीठे भी नहीं होंगे. बिकॉज इट वॉज आउट ऑफ हिज रीच, सो ही वॉज ट्राइंग टू मेक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स. सो tis thus we often wish through life when seeking wealth and power, and when we fail, say like the fox, we are sure the grapes are sour. So students, this is the example of our daily life. Then when we are seeking, when we are searching for wealth, when we are running after properties and wealth and for mundane things, so we try to grab them, but when they are out of our reach, when we do not get them, when we fail and we do not succeed in getting what we want, what we desire for, we usually say this, that the grapes are sour. So this is a proverb, this is a saying that is used to say when the things that we are seeking are out of our reach. तो यही होता है बच्चों हमारी ज़िंदगी में, जैसे इस फॉक्स के साथ हुआ कि इसको वो अंगूर बड़े अच्छे लगे, बड़े मीठे लगे, और इसने चाहा कि मैं उनको हासिल कर लूँ, लेकिन वो इसको जब हासिल नहीं कर पाया तो उसने क्या कहा, अंगूर खट्टे हैं. तो हमारे साथ भी बच्चों हमारी ज़िंदगी में यही होता है कि जब कोई चीज़ हम हासिल नहीं कर पाते तो हम भी यही कहते हैं कि ये अंगूर खट्टे हैं, यानी कि वो चीज़ हमें, जो चीज़ हमें चाहिए और वो हमें मिल नहीं पाती, तो हम जो है वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और हम अपने आप से जो है वो कहते हैं ना, भीगी बिल्ली बनकर ये कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं. Now students, hold a pencil in your hand. I have collected some of the meanings for you. I've brought some synonyms for the words given in the text, so just note them down. Trotting means jogging, roaming around, bhagte दौड़ते इधर उधर टहलना. Vine is any plant with a growth habit of trailing or climbing stems. एक ऐसा प्लांट जो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है उसको कहा जाता है वाइन. Rich means full of, loaded. Rich हम उसको भी कहा जाते हैं, कहते हैं अमीर लोगों को, क्योंकि वो उनके पास दौलत भरी हुई होती है. तो हम चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ये वर्ड, जिसका मतलब ये है कि जो चीज़ किसी चीज़ से भरी हुई हो, फुल हो, तो फुल ऑफ और लोडेड विथ समथिंग. राइप मीन्स रेडी टू ईट, फुल ग्रोन, एक चीज़ जो तैयार हो, पकी हुई हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मोस्टली फॉर दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ईगो मीन्स इम्पेशेंट, कीन, डिज़ायरेबल, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहना और बेताब हो जाना किसी चीज़ को हासिल करने के लिए वी यूज़ ईगर. स्नैच मीन्स टू ग्रैब, टेक होल्ड ऑफ और गेट, यानी कोई चीज़ छीन लेना, हासिल कर लेना और कोई चीज़ पा लेना. वी यूज़ टू दिस वर्ड फॉर दिस. गिव अप मीन्स टू सरेंडर, किसी चीज़ के लिए हार मान लेना, ठीक है. देन वी हैव अ वर्ड हीविंग. हीविंग मीन्स ब्रीथ, लेट आउट, ठीक है, सांस बाहर निकालना. साई मीन्स ग्रोन, एक्सेल, और इसका मतलब क्या है कि ज़ोर से सांस लेना, आह भरना, ठीक है. आह मतलब यानी तकलीफ से या अफसोस से आह भरने को कहते हैं. कर्ल्ड हिज नोज मीन्स नाक से कोड़ना, रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज़ को जो है वो नाक मुँह बनाना कि मुझे ये नहीं चाहिए. दस मीन्स देयरफॉर, ऑफन मीन्स मैनी टाइम्स, यूजुअली. सीकिंग मीन्स लुक फॉर, सर्चिंग, किसी चीज़ को तलाश करना और किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करना. Here we have completed with the reading part and explanation of this poem. Students, please tell me in the comment section that how was the video. Thanks for watching the video till the end. Take care. Allah Hafiz.